Assalamu alaikum guys, we are back with our 31st podcast. As usual, it's me Abdullah Ali Khan. आज का हमने टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा सा लाइट टॉपिक चूज किया है. वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर फेवरेट टीवी shows, our favorite films, or our favorite books, and we are going to tell what we learn from them, and how do these TV shows or films or anything, the any of these kinds इंस्पायर अस, ये हमें कैसे इंस्पायर करती हैं या फिर हमने इनसे क्या सीखा और व्हाई डू वी लाइक देम. सो अब्दुल्ला, आप आपका ये सजेशन था, तो आई वुड लाइक यू टू टेल अबाउट any kind of series or any kind of film that you recently watched और आपको लगा हो कि अब it was really great and it is worth sharing with the audience. यार ये थोड़ा बेसिकली लाइट हार्टेड एपिसोड है जिसमें हम बात करेंगे अबाउट आवर फेवरेट टीवी शोज, अबाउट आवर फेवरेट मूवीज, अबाउट आवर फेवरेट बुक्स इवन. तो इट्स काइंड ऑफ यार थ्रू डिफरेंट फेजेस ऑफ योर लाइफ आप डिफरेंट जानरे को एक्सप्लोर करते हो. आई वाज बेसिकली पहले इंटरेस्टेड इन नॉन फिक्शन, सॉरी फिक्शन, लेकिन अब आई एम रीडिंग नॉन फिक्शन और मैं फिल्म्स और टीवी शोज वगैरह की भी बात करूँ. आई डोंट वॉच अ लॉट ऑफ टीवी शोज वगैरह. लास्ट मैंने फिल्म देखी है कुछ एक साल के बाद, लास्ट वीक, मोहला जट विद माय फ्रेंड सिनेमा जाके. अमेजिंग मूवी. मेरी फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम या फिर टॉप 3 की बात कर लो तो द फर्स्ट वन इज इट्स अ वंडरफुल लाइफ. काफ़ी पुरानी मूवी है, 1940s की, आई थिंक 1946 में रिलीज हुई थी. इट्स बेसिकली अबाउट अ मैन who's kind of depressed and who's suicidal as well. और वो सोचता है कि यार अच्छा what would happen if I did not exist, अगर मैं होता ही ना इस दुनिया में, अगर मैं पैदा ही ना हुआ होता, तो would the world be a better place, would the world be a far worse place. तो he is imagining that. फिर what happens is कि an angel, आप कह रहे हो अभी थोड़ा और लग रहा है, लेकिन an angel appears out of nowhere and shows him in his head what it would be like अगर वो कभी ना पैदा हुआ होता. और वो देखता है कि इन पैरेलल यूनिवर्स जहाँ वो नहीं पैदा हुआ होता तो कितनी डिफरेंट होती जिंदगी, कितनी डिफरेंट होती उसकी पेरेंट्स की जिंदगी, और एवरीथिंग इज बेसिकली डिफरेंट इन दैट वर्ल्ड. और इट काइंड ऑफ शोज यू to find hope and to find good in the things which are seemingly bad for you, or या फिर in difficult circumstances as well. So it changes your outlook towards life. I saw that in a relatively not so good phase of my life, and it changed my outlook towards life. Basically hit those pain points and it set them right. It worked for me. It's a very amazing movie. It will always be one of my top 3 movies to suggest. It's a wonderful life. और इसके अलावा देयर इज अनदर मूवी. आई एम बेसिकली फैन ऑफ क्लासिक्स, बुक्स में भी, मूवीज में भी, टीवी शोज में भी. there's this film called Good Will Hunting. Good Will Hunting भी एक काफ़ी amazing movie which everyone should watch, I think. So it's about a mathematical genius. There's this guy, right? और it's like you obviously know कि यार हमारी ज़िंदगी में जो भी होता है, right? If tragedy happens to you, you become the tragedy, right? If bad things happen to you, it becomes a part of you. Like Nietzsche said, when you stare into the abyss stares back at you. So if something messed up happens to you, it in turn makes you a messed up person. So in this movie as well, Good Will Hunting, इसमें भी दिखाते हैं कि there is this guy who has a lot of baggage, a lot of emotional baggage, and because of that, he himself is a very complicated person, you can say. So he's forced to confront that complication inside of him through an emotional mentor या फिर therapist आप कह सकते हो. तो उसकी journey है basically movie Good Will Hunting. You should watch that as well. So what about you? We could go back and forth with suggestions. You could suggest some, I could suggest some. अब्दुल्ला, एज यू नो कि मैंने बहुत दफ़ा तुझे दिखाए भी थे, और बेसिकली मैंने ये शो देखा था. इट वाज अ एनिमेटेड टीवी शो. आई वॉच्ड इट अराउंड लास्ट ईयर. And the funny thing is कि मुझे किसने ये सजेस्ट नहीं किया था. Just discovered this TV show by myself. इसका नाम था बोन डॉग्स. It's a comedy TV show, animated series created by Aaron McGruger. एक बहुत ज़बरदस्त राइटर है. और yes, this TV show was aired back in 2000s, 2001 से लेकर मैं हमेशा 2008 या 9 या 10 तक ये गया था. इसके basically 4 seasons थे.
और इसमें जो मुझे यूनिक चीज़ ये लगी कि करेक्टर्स के ऊपर थी। और एक करेक्टर जो था जिसका नाम एरन, एरन क्यों सॉरी, एक तो करेक्टर था रायली, और दूसरा था उसका था नाम था फ्री मैन, क्या नाम था उसका, आई फॉरगॉट हिज नेम। ही वाज हुई, ह्यूई एंड रायली। ये दोनों भाई होते हैं। दे आर Hmm. बेसिकली अफ्रीकन अमेरिकन, जो कि अपनी पेरेंट अपनी मॉम के साथ रह रहे होते, बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेज, और यू कैन से दे आर ड्यू टू सम फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेज, या फिर किसी भी कंडीशन की वजह से दे आर सेंट टू लिव विद देयर ग्रैंडफादर। उनका जो ग्रैंडफादर है बहुत अमीर, मतलब कि अमीर नहीं होता, मतलब कि ही इज़ वेल ऑफ, ही इज़ लिविंग इन सबर्ब्स, ही इज़ नॉट लिविंग इन हुड, or you can say he's not living in underprivileged areas as most of the African Americans do live. तो ये सारा उनका जर्नी होता है। एंड इट उसमें दिखा जो इस शो का जो डायरेक्टर और राइटर है एरन मैक्रूगर, उसने अपने जो आप कह लो कि अपनी तो आइडियोलॉजी है, अपने जो व्यूज़ हैं अबाउट स्लेवरी, अबाउट रेसिज्म अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन्स, उनकी जो डेली लाइफ में उनके साथ जो रेसिज्म होता है। इसके अलावा जो वाइट अमेरिकन्स जो हैं, हाउ दे डू रिएक्ट टू some things that they find you can say weird about African Americans, and how do they react to them as well. एंड उसने ये सब कुछ पोर्ट्रे किया बड़े ज़बरदस्त तरीके से, बड़े फ़नी वे में। और इसका जो शो था, इट वाज वेरी पॉलिटिकल, बिकॉज एट दैट टाइम अमेरिका वाज स्टिल गोइंग थ्रू वॉर ऑन टेरर, एंड अमेरिकन फोर्सेस जो थी वो अफगानिस्तान में भी थी और इराक में भी थी। आपको उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मज़े मज़े के आपको स्केचेस मिलेंगे शो के दौरान। इसके अलावा हर जो कैरेक्टर है इस शो के अंदर, ही रिप्रेजेंट समवन। जैसे कि इनके वो दिखाते हैं कि इनकी जो पूरी सोसाइटी होती है जिसमें ये लोग रह रहे होते हैं, सबब का जो पूरे सबब का जो सबसे अमीर तीन आदमी होता है, ही इज़ बेसिकली यू कैन से अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ही रिप्रेजेंट्स यू कैन से ग्रीडी पीपल इन आवर सोसाइटी, इन वेस्टर्न सोसाइटीज़, जो कि लोगों को एक्सप्लॉइट करके पैसा बनाते हैं। इसके अलावा जो ह्यूई है, जो कि राइटर को खुद एक मतलब कि एक मिरर कैरेक्टर है राइटर की सोच का। ह्यूई को दिखा देंगे, ह्यूई इज़ वेरी एजुकेटेड, ही लर्न्स अ लॉट फ्रॉम बुक्स, वो बुक्स काफ़ी ज़्यादा रीड करता है। ही टेक्स हिज टाइम रिसर्चिंग एंड रीडिंग लिटरेचर एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ हिस्ट्री बुक्स। मगर जो उसका जो काउंटर पार्ट है वो उसका ट्विन ब्रदर ही है, फिर हिज नेम इज़ रायली। और रायली जो है, रायली इज़ टिपिकल ब्लैक पर्सन हु इज़ लिविंग इन अ who lives in a hood. अब रायली जो है, रायली इज़ अ फनी कैरेक्टर एज वेल, बिकॉज जो वो चीज़ें करता है, इट रिप्रेजेंट्स द awkward and stupid things that most of people do in our society to to look cool, या फिर कूल लगने के लिए, या फिर अपने आप को आप कह लो कि कूल दिखाने के लिए जो जो चीज़ें करते हैं, वो किस तरह मतलब कि इन टर्न उनको स्टूपिड दिखा रही होती हैं। तो यस, आई फाउंड दिस शो वेरी इंट्रिगिंग, और मैं इस शो की एपिसोड्स को बार बार देखता भी हूँ, तो मैं बोर नहीं होता, बिकॉज जो राइटर ने जिस तरीके से शो को लिखा है, आई थिंक सो कि अगर ये शो आज के दौर में एयर होता, इट वुड बी कैंसल्ड स्ट्रेट अवे। क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों पे उसने फ्रीली अपना जो आइडिया है, अपना जो व्यू है, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पोर्ट्रे किया। ही पोर्ट्रेड हाउ, मतलब कि हाउ जैसे कि देयर इज़ अ नोशन कि अमेरिका जो है बिफोर कि जब स्लेव्स का दौर था, उससे लेकर आज तक जितनी भी मतलब कि फ्रीडम मूवमेंट जो अमेरिकन्स ने, जो अफ्रीकन अमेरिकन्स ने की, उनमें हर दौर में कितना फ़र्क रहा। इसके अलावा द राइटर ऑल्सो शोज़ कि ही बिलीव्स दैट ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन्स आर स्टिल अंडर प्रिविलेज्ड, और उनको जानबूझ के गवर्नमेंट जो है उनको लो इनकम एरियाज तक कन्फाइंड रखती है, और किस तरह उनकी लाइफ हार्ड बनाई जाती है। एंड देन ही ऑल्सो ट्राइज टू शो अस कि अगर एक बच्चा इस तरह के एनवायरनमेंट में बड़ा होता है कि जहाँ ड्रग्स हैं, जहाँ मनी है, जहाँ मतलब कि हर वक़्त गैंग वॉर्स हैं और स्ट्रीट ब्रॉल्स हैं, उसमें वो सब किस तरह अपना आप कह लें कि ही ट्राइज़ टू सेव देमसेल्व्स, एंड और उसमें जो इंडिविजुअल निकलता है वो किस तरह का निकलता है। ही टेक्स शॉट्स एट अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन कल्चर एज़ वेल, देन ही टेक्स शॉट्स एट ब्लैक एंटरटेनमेंट टेलीविज़न एज़ वेल, क्योंकि बीईटी उस वक़्त जो था वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था।
बीटी जो था उसका नाम, इसका जो फुल एब्रीविएशन है वो था ब्लैक एंटरटेनमेंट टेलीविजन। बीटी पे रियलिटी शोज आते हैं जिस तरह के पाकिस्तान में देखे जाते हैं, लिविंग ऑन दी एज, जो रोडीज इंडिया में। तो बीटी में भी इस तरह के स्टूपिड शोज आते थे। और बीटी एक तरह का म्यूजिक चैनल था, इस पे हर वक्त ब्लैक रैपर्स की म्यूजिक और उसमें जिस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया जाता था जैसे कि ड्रग्स, गन्स, उसने उन सब के ऊपर शॉर्ट्स लिए एंड ही ट्राई टू टेल हिज ऑडियंस कि देखो these things are making you stupid and dumber, and these kind of television networks, they make money by showing you these kind of stupid things, these kind of cringe things. They make you addicted to their stuff, not because they are trying to make money, no, but just because they are following an agenda, and the agenda is to promote a false created black culture into the society, जिसमें जिसकी वजह से जो है ब्लैक पॉपुलेशन जो है वो अमेरिका की वो सप्रेस्ड रहे थ्रू आउट जनरेशंस। तो यस, बून डॉग्स बहुत मज़े का शो है, बहुत कॉमेडी उसके अंदर है। मज़े की बात है कि इसको आप देखिए बोर नहीं हुए, क्योंकि ये शो के जो मेन थीम है वो कॉमेडी है। तो जिसने भी देखना हो ये इस तरीके से ना देखे कि सीरियस शो है। नो, इट्स नॉट अ सीरियस शो, इट्स फुल ऑफ कॉमेडी, इट्स फुल ऑफ सार्केज़म। तो अब्दुल्ला को भी मैंने कुछ एपिसोड्स दिखाई थी, तो वो भी बता सकता है आपको कि किस तरह का ज़बरदस्त शो था। हाँ, यू सजेस्टेड मी लॉन्ग अगो, फिर हम लोग एक पॉडकास्ट के बाद ही हम लोग बात कर रहे थे। यू शोड मी अ कपल एपिसोड्स, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और द थिंग विद सच शोज इज के ऑन द सरफेस लेवल आपको लगता है अच्छा दिस इज जस्ट कॉमेडी, राइट? लेकिन इट रिफ्लेक्ट्स अ डीपर पार्ट ऑफ सोसाइटी अबाउट द लाइव्स ऑफ marginalized communities like black people. और आप you're having fun while watching those episodes, but at some places you realize कि अच्छा this actually reflects reality. जिस तरह कुछ episodes में एक it's like they take direct shots at some individual, जिस तरह वो एक सिंगर था जिसके पूरे के बारे में पूरे एपिसोड बनाई हुई थी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यस, आई लाइक आर दैट। केली, आर केली। यस, सो हाँ। उस वक्त आर केली का जो सीन का जो केस था वो न्यूली रिसरफेस हुआ था कि उसने अंडर एज गर्ल के साथ किया था। तो उसकी वजह से उसने ये दिखाया कि किस तरह जो थे मैसेज उसको ब्लाइंडली कह रहे थे कि नहीं, बच्ची की गलती है। उसने दिखाया कि बच्ची का भी क्या कसूर हो सकता है, क्योंकि हम्म, इट वाज अ कंसेंशुअल एक्ट, उसमें कोई रेप नहीं था। और हम्म। फिर उसने ये भी दिखाया कि हाउ, मतलब कि जो इंडिविजुअल्स जिनको हम फॉलो करें, इन इंडिविजुअल्स का कितना लो आईक्यू है, कितने लो स्टैंडर्ड्स हैं। तो यस, बहुत ज़बरदस्त। अपने में कहूँगा अपने दौर के लिहाज से दिस टीवी शो वाज अ वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। और अगर आज भी इसको रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे ये लोग अभी, आई थिंक सो, if you know about Adult Swim was trying to reboot Boondocks, मगर उसको कैंसिल करना पड़ा because of all the controversies the first part of the show followed. तो उसके बाद से I think so they cancelled Boondocks, but hopefully maybe we will ever be able to see some more seasons of Boondocks. इसके अलावा कोई और सीरीज अब्दुल्ला that you would like to recommend to people? About my favorite movies, पहले I talked about इट्स अ वंडरफुल लाइफ, फिर आता है आपका गुड विल हंटिंग। इसके अलावा आई लव डेड पोइट सोसाइटी, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं आई एम अ पोइट, आई एम अ राइटर एज वेल। तो बेसिकली आई रिलेटेड टू दैट अ लॉट। यू शुड बेसिकली वॉच दैट मूवी डेड पोइट सोसाइटी। इसके अलावा द लाइफ ऑफ डेविड गेल अच्छी है। द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन इज एन अमेजिंग मूवी। अबाउट टीवी शोज, यार मेरी सोशियोलॉजी की मिस ने कहा था, इंस्ट्रक्टर ने कहा था कि यार यू गाइस शुड वॉच। अच्छा, हमारी क्लास में बात हो रही थी, मिस मिस से मेरी एक बात हुई अबाउट जॉन लॉक्स थ्योरी ऑफ द बुला रासा। तो मिस वाज लाइक अच्छा, आई एम ग्लैड कि यू नो दिस, कि यू नो दिस थ्योरी। तो अगर इफ यू इंटरेस्टेड इन फिलोसफी तो यू शुड वॉच दिस सीरीज कॉल्ड लॉस्ट। तो लॉस्ट भी थोड़ी लाइक इट्स नॉट अ मॉडर्न सीरीज, थोड़ी पुरानी है। तो आई वॉच्ड इट। और इट्स लाइक लॉस्ट में जो भी कैरेक्टर्स है ना, उसकी बेसिकली थीम ये है। ये एक प्लेन होता है, प्लेन टेक ऑफ तो करता है लेकिन वो इट 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 क्रैशेज इन ऑन एन आइलैंड, राइट? और वो आइलैंड में डिफरेंट अजीब सी चीज़ें होती हैं। इट्स अबाउट हाउ हाउ दे एस्केप एंड ऑल ऑफ दैट। उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो हर कैरेक्टर का नाम है आफ्टर सम फिलोसोफर। जिस तरह एक एक बूढ़ा आदमी होता है, उसका नाम होता है लॉक। और उसकी पर्सनैलिटीज़, उसकी उसकी आउटलुक, उसका बोलना
उसकी उसकी बिलीव्स सारे रिफ्लेक्ट करते हैं असल में जॉन लॉक को, जो एक इंग्लिश फिलोसोफर था। तो हर कैरेक्टर का बेसिकली मोस्ट मोस्ट कैरेक्टर्स का नाम है आफ्टर फिलोसोफर्स, और उनकी उसी तरह की डीलिंग्स होती हैं विद अदर पीपल। तो बहुत इंटरेस्टिंग था। और अगर तो फॉर एग्जांपल एक इंसान जिसने नहीं पढ़ी हुई किताबें मेजर फिलोसोफर्स की, वो लॉस्ट देखता है, तो शायद उसको इतना मज़ा ना आए जितना एक इंसान जिसने ये किताबें पढ़ी हुई हैं अबाउट अबाउट दोज फिलोसोफर्स, फिर वो उसको देखेगा। लॉस्ट के अलावा फ्रॉइड was a very good season I watched. It was about the life of Sigmund Freud, obviously. थोड़ी सी उसमें थोड़ी यूनिक एलिमेंट्स हैं अबाउट हिज ड्रग एडिक्शन एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। इसके अलावा अगर हम थोड़ी साईफाई की बात करें तो अल्टर्ड कार्बन एंड 12 मंकीज, ये दो शोज हैं विच आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ द आइडिया ऑफ टाइम टाइम ट्रैवल, राइट। तो 12 मंकीज में भी ये सीन होता है कि देर आर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु ट्रैवल बैक इन टाइम टू सेव अर्थ, क्योंकि द अर्थ वाज गोना बी डिस्ट्रॉयड इन द मैनी इयर्स टू कम। तो उसमें ये मेजर थीम होता है। I really love this TV series 12 Monkeys. I've watched it twice in the past. और इसके साथ साथ अल्टर्ड कार्बन भी इसी तरह का शो है। उसका सीजन 1 बहुत कमाल है, सीजन 2 में जाके इट गेट्स वे टू कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इट ट्रेवल्स अराउंड द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ट्रैवल बेसिकली। ब्लैक मिरर और डार्क, यू नो, आई थिंक सो you're very fond of those two shows as Yeah, well. Black Mirrors, I loved watching at one point, but it's too creepy for me, because the thought of things that they portray in their episodes, they are very frightening. जैसे कि पूरा मैट्रिक्स वाला सीन होता है। yes, because उसमें एक एपिसोड थी, जैसे कि if you remember Black Mirrors में कि uh, it's about future कि if you want you can block any person in your real life as well. तो उसमें दिखाते हैं कि किस तरह एक औरत होती है, she blocks her husband from her life. Now the problem is that husband is not able to see her wife, his wife, and her wife is not able to see him. Or he did something regretful, जिसके लिए वो माफ़ी मांगना चाहता है, मगर उसकी बीवी जो है उसको परमानेंटली ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से वो उसको कोई सेकंड चांस नहीं मिलता just to tell her that how sorry he was. फिर then he tries to see, उसका एक बच्चा भी होता है, वो उसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है जिस वक्त उसको ब्लॉक करती है। फिर वो दिखाते हैं कि ही स्टार्ट्स टॉकिंग हिज वाइफ, जिसमें उसको मालूम होता है कि उसकी वाइफ उसकी ऑलरेडी चीट कर रही थी। फिर उसको मालूम होता है कि उसका एक बच्चा भी पैदा हुआ है क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। एंड he could not see his wife at all because he was blocked from his wife, but he was somehow able to see his child, which made him think कि which made him to come to a conclusion कि उसके जो बच्चा था वो बच्चा उसका अपना नहीं था, it was someone else's child. And उसकी जो बीवी थी, she was only finding a way to get away from him from the start. And then things starts getting violent, and yes, so उस एपिसोड का काफी ट्रेजिक एंड था। And ब्लैक मिरर की सारी एपिसोड ऐसी हैं यार, बड़ी सारी बहुत माइंड फकिंग है, जिस वन ऑफ द रीजंस आई लव इट। yes, but the problem is that I'm not really interested in seeing these kind of episodes because मेरा प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इस तरह की एपिसोड देख लूँ फिर मैं सारा दिन बैठ के सोचता रहता हूँ उसके ऊपर कि why did that happen, and if that happens in future this is really effed up. ये तो हमारा पूरा वॉच डार्क वैसे। Dark. No, I haven't watched Dark. South ने देखा था मगर I haven't watched Dark. But yes, coming to the TV shows, I used to watch anime a lot. आज से 3 से 4 साल पहले, और उसमें जो मैंने एक एनिमे देखा था उसका नाम क्या था, हंटर एक्स हंटर। इट वाज अ वेरी 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 गुड एनिमे इस सेंस में था क्योंकि उसका जो थीम था, उसका थीम बहुत फिलोसॉफिकल था। उसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट था, उसका जो पूरा जर्नी, हाउ ही सफर्स एंड आफ्टर सफरिंग व्हाट ही बिकम्स, इट वाज रियली इंट्रीगिंग। मतलब कि हंटर एक्स हंटर एक ऐसा टीवी शो था, उसमें से एक कोट था कि लाइफ इज लाइक अ जर्नी एंड you should take small detours in the journey just to enjoy the things on in those detours. अगर आपका एक जर्नी लाइफ में, तो you should take some detours to get away from your path sometimes just to enjoy small things in your life. और हंटर एक्स हंटर की मज़े की बात ये थी कि उसमें ये भी दिखाया गया कि हाउ humans have destroyed the world
वी से देखिए हम लोग सबसे इंटेलिजिबल बीइंग्स हैं, मगर हमने अपनी सोसाइटी किस तरह स्ट्रक्चर की हुई है टू मेक रिच मोर रिच, टू मेक पुअर मोर पुअर, टू सप्रेस पीपल। और उसमें बेसिकली ये दिखाते हैं कि ह्यूमंस के साथ एक इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स की एक रेयर किस्म की ब्रीड बनना शुरू हो जाती है सोसाइटी के अंदर इंसेक्ट्स की। एंड नाउ दीज इंसेक्ट्स आर रियली पावरफुल। एंड अब जो इंसेक्ट्स है वो उनके साथ वही सलूक करते हैं जो ह्यूमंस अपने से कमज़ोर लोगों के कमज़ोर चीज़ों के साथ करते हैं। जैसे कि हम जानवरों को बंद कर देते हैं केज के अंदर, ठीक है, हम उनको काट के खा जाते हैं, ज़िबा करके खा जाते हैं। उसका थीम ये था कि जो अब जो इंसेक्ट्स का जो हाइब्रिड जो क्रीचर्स जो बन रहे थे सोसाइटी में, जो पैदा हो रहे थे, they were way more powerful than humans, and now they were treating the humans जैसे ह्यूमंस ने अपने से कमज़ोर लोगों को ट्रीट किया था। क्योंकि उनके अंदर भी एक जो एलिमेंट है थिंकिंग का, दैट एलिमेंट ऑफ थिंकिंग केम फ्रॉम द ह्यूमन साइड ऑफ देयर जीन्स। इससे हमें ये मालूम होता है कि क्यों हम लोग शायद इसी वजह से बहुत ज़्यादा सोच के घबराते हैं अबाउट एलियंस। एलियंस के बारे में हम लोग सोच के क्यों डरते हैं? बिकॉज़ वी नो कि अगर हम कभी एलियंस से मिलेंगे, दे वुड बी मोर टेक्नोलॉजिकल एडवांस फ्रॉम अस, ठीक है, टेक्निकली एडवांस फ्रॉम अस। And when a species is more technically advanced from us, it means they are more powerful than us. तो हमें पता है कि जब हम में से कोई नेशन या फिर कोई भी ह्यूमन जब पावरफुल होता है, हाउ ही ट्रीट्स हिज काउंटर पार्ट्स। इसी तरह हम लोग घबराते हैं कि जब हम कभी एलियन से मिलेंगे या किसी और मखलूक से मिलेंगे, हाउ दे वुड ट्रीट अस। वुड दे ट्रीट अस द सेम वे दैट वी ट्रीट ईच अदर, or they would be or they would be, you can say, more awakened or enlightened. So Hunter x Hunter was a really good anime if you guys are into animes. So this was the last anime that I watched, Hunter x Hunter. Apart from that, I really found कि someday में बर्जर्क एक एनिमे है, मांगा है, उसके बारे में मैंने बहुत तारीफ सुनी है। सब लोग कहते हैं कि इट्स वेरी फिलोसॉफिकल, वेरी 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 इंटरेस्टिंग मांगा। और मैं तो खुश ये भी देखा है कुछ लोगों ने जिन्होंने बर्ज़र्क का जो मांगा पढ़ा है उसके बाद उनका पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। उनका आउटलुक पे जो आउटलुक है अपनी लाइफ पे उनका पूरा चेंज हो गया। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी लाइफ को जो बर्ज़र्क का प्रोटैगनिस्ट है उसके लिहाज से गुजारने की कोशिश करते हैं। लाइक इट्स सच अ बिग it has such a big impact on some individuals. So I hope someday I read that manga as well. Have you ever heard about that यार मैं उसी में Berserk? आई एम सर्चिंग इट राइट नाउ। मैंने मैंने सुना नहीं है। मैंने हंटर एक्स हंटर का सुना था, एक पॉडकास्ट देख रहा था और उसमें द गाय सेड कि यार ये एक काफ़ी फिलोसॉफिकल एलिमेंट है हंटर एक्स हंटर के अंदर, और इट विल चेंज समथिंग इन यू, क्योंकि यू विल रिलेट टू अ कैरेक्टर, लेकिन उसकी डेवलपमेंट देखने के बाद इट विल चेंज समथिंग इनसाइड ऑफ यू टू। तो मैंने कहा था कि मैं देखूंगा, लेकिन है बहुत लंबा और वो टाइम कमिटमेंट नहीं मिल रही है, तो मैं अभी देख नहीं पाया। बाकी isn't Berserk the place of the name of that place हमारी इस्लामिक थियोलॉजी में, जहाँ पे where souls live basically, does it relate to that, or या फिर बिल्कुल डिफरेंट कोई? I haven't really watched this show, but yes, it is a dark fantasy world in which हम्म, Berserk is placed. But yes, maybe you are right. I don't know, but मैंने यार हम्म, देखा है काफी लोगों को कि जिन्होंने ये मांगा पढ़ा उसके बाद they are not the same person that they were. और मुझे काफी दोस्तों ने रिकमेंड किया, but I because the problem is that I can't really read mangas because यार वक्त नहीं होता है इतना। We have हम्म, some commitments, we have our own lives. As you told me, Hunter x Hunter देखने का टाइम नहीं है because it is 140 episodes. You can't really watch it now. मैं पहले देख लेता था ऐसी चीजें, मगर now it's too much going on in life. हम्म। Anything else you want to add, Abdullah? यार if some people are interested in history या फिर कुछ, तो मार्को पोलो, यू टोल्ड मी अबाउट मार्को पोलो, मैंने Oh देखा my था, god. आई वॉच्ड इट ट्वाइस यार। वो बेसिकली मैं मंगोल्स की जो कल्चर है ना, एंशिएंट मंगोल्स, किंगिस खान, कुबलाई खान, ऑल ऑफ दैट, तो आई एम इंटरेस्टेड इन दैट अलॉट, काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ मैं उसमें। तो ये जो मार्को पोलो है, इट्स अबाउट द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो। वो मिलता है चिंगिस खान से, सर कुबलाई खान से, और उसके दरबार में वो कहते बन जाता है, और बेसिकली उसकी लॉयल्टी टेस्ट वगैरह होती है।
एक एक किताब थी, द सीक्रेट इन हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स, इस तरह कुछ करके। और वो किताब सिर्फ और सिर्फ इन इन मंगोल्स की जनरेशन में चली आ रही थी। तो दिस बुक वाज लेटर फाउंड। उसकी किताब के अंदर से फिर जॉन मैन ने अपने वर्जन्स निकाले किताबों के, विच यू हैव एंड विच आई हैव। और उस किताब से ही फिर ये सीरीज बनी मार्को पोलो। तो इफ यू इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री तो बहुत कमाल सीरीज है। और या आई थिंक यू शुड वॉच दैट। इसके अलावा एक और सीरीज है अबाउट टाइम ट्रैवल, अगेन काइंड ऑफ हैज दैट कॉमेडिक एलिमेंट टू इट, रशियन डॉल के नाम से। कि दिस गर्ल वेक्स अप एंड शी गोज टू अ पार्टी एंड वहाँ पे शी डाइज। ठीक है, एंड व्हेन शी डाइज सारा रीसेट हो जाता है। शी अगेन वेक्स अप, शी अगेन गोज टू द पार्टी, शी अगेन डाइज, देन शी अगेन वेक्स अप, और वो फिर लूप चलने शुरू हो जाता है। एंड शी हैज टू फाइंड अ वे टू कम समहाउ कट दैट लूप। तो आई लाइक दैट सीरीज। इसके अलावा फार्गो, आई हैव यू वॉच्ड फार्गो? वैसे आई थिंक सो यू सजेस्ट मी टू वॉच। नो, फार्गो फिर मेरे किसी दोस्त ने बोला था, एंड आई लव दैट सीरीज एज वेल। इट्स लाइक इट्स अ वेरी यूनिक सीरीज। और उसको मैं ऑब्वियसली 2-3 लाइनों में नहीं शॉर्टन कर सकता। उसके अलावा ब्रेकिंग बैड, ऑब्वियसली यू टोल्ड मी टू वॉच इट, आई लव दैट। और थोड़ा स्लो है, शुरू में बहुत स्लो होता है। आई आई रिमेंबर कि जब मैं पहले कुछ एपिसोड देख रहा था ब्रेकिंग बैड के, आई वाज लाइक यार ये तो बहुत स्लो चल रहा है, मैं छोड़ देता हूँ इसको। लेकिन फिर मैंने नहीं छोड़ा, मैंने देखता रहा, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ माय टॉप 3 सीरीज टू दैट आई हैव एवर वॉच्ड। बस मैंने अभी आप वही आज से 2-3 साल पहले एक शो देखा था, वॉकिंग डेड। मुझे एक दोस्त ने सजेस्ट किया था। इट्स अ सीरीज बेसिकली। इट्स बेस्ड इन पोस्ट अपोकलिप्टिक टाइम पीरियड, जब जिस तरह कि आपने अगर वो खेला हो, वॉकिंग डेड की गेम खेली हो, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा व्हाट वुड वॉकिंग डेड बी अबाउट। सो वॉकिंग डेड में बेसिकली होता है कि एक वायरस आउटब्रेक होता है। वायरस आउटब्रेक के बाद जो ह्यूमंस हैं, दे स्टार्ट टर्निंग इनटू zombies। zombies के अंदर टर्न होने के बाद दे स्टार्ट ईटिंग ईच अदर। मगर जो इस स्टोरी का जो प्रोटैगनिस्ट है, रिक ग्राइम्स, ही वाज इन हॉस्पिटल एंड when outbreak happened, and he was in coma for about 2, 3, or 4 weeks. I don't know how long he was, but he was in there for a long period of time, maybe 1 or 2 weeks. And when he wakes up, he's really shocked to see the state of the hospital he was in. The hospital is completely destroyed. अपने घर जाता है, अपने घर में भी उसको कुछ नहीं मिलता, उसकी फैमिली भी नहीं होती। And yes, so it basically, the pehla season is where he tries to find his family and all that stuff. Then but as you continue, you can say it's a very good TV show, because उसमें दिखाया गया है कि ह्यूमन की नेचर कैसी है। He comes around different individuals who have different set of morals, or how they are driven by those different set of morals in that post apocalyptic world. कुछ लोग हैं, दे आर अ बिट डेमोक्रेटिक, कुछ हैं दे आर अ बिट डिक्टेटरशिप वाली एबिलिटीज होती हैं, या फिर उनकी सोच होती है। some of them are they are some kind of socialist, and all in all in all these kind of kingdoms, or all these kind of settlements he finds, we see about the bad or the dark thing that happens in those settlements that the normal people living over there are not really aware of. तो उसमें जो रिक राइफ का जो करेक्टर है वो प्ले किया है एंड्रयू लिंकन ने, और ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स। और एंड्रयू लिंकन ने जो इसमें एक्टिंग की है, स्पेशली इन द नीगन सागा, इफ एनीवन हैज वॉच्ड वॉकिंग डेड, he's a really good actor, and I'm really frustrated कि why hasn't he worked in any other TV shows, because उसकी acting बहुत ज़बरदस्त थी। And I think so this TV show just ended now, just 1 month ago, officially. मगर yes, if anyone wants to watch a long TV show, and तो they should really watch Walking Dead, because Walking Dead का जो पूरा environment है, एक जो setting है, वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत intriguing है। और as you continue watching the show, you get used to it basically. Or when the show ends, you feel really sad, because you get used to the show all this time,
and you are not really accepting that the show has ended. इसके बाद मैंने अभी recently एक मूवी देखी थी. If anyone is into history, World War history, I watched a movie named The Pianist. Pianist is about a real life pianist who was in Poland, who was a Jew. और this shows कि Jews के साथ किस तरह का सलूक हुआ after Germany invaded Poland, and they uh, and Poland के साथ के अंदर जो Jews थे उनके साथ क्या हुआ. और दिखाते हैं कि हाउ ही सफर्ड, उसकी फैमिली को किस तरह उसके सामने ट्रेन में भेज के मार दिया गया, एंड हाउ ही सफर्ड, हाउ ही was not able to eat anything for days and days, how he used to live in sewers, how he used to live in abandoned buildings, just trying to survive. और उसमें जो सबसे मेरा फेवरेट सीन पियानिस्ट में ये था कि once he's going through rubbles, and once he's going through different buildings destroyed from the war, here he comes across a big house. उस घर के अंदर वो शेल्फ के अंदर से खाना ढूंढ रहा होता है खाने के लिए, because he is starving from not eating anything from a long period of time. So yes, as he's going through things, he drops some things, और उस बिल्डिंग के ऊपर वाले पोर्शन में आई थिंक सो एक जर्मन कमांडर रह रहा होता है. तो yes, तो जर्मन कमांडर he asks him कि तुम्हारा नाम क्या है. Then he asks him what you do. He tells him I'm a pianist, and then he asks him to play him something, just to make sure that if he's telling the truth or no. फिर वो पियानो बजाना शुरू करता है, और जो पीस है जो है वो पियानो का जो बजाता है उस वक्त खाली पेट, एज ही स्टारविंग. और उसकी जो हालत की जितनी भी ख़राब हुई होती है, एज ही फाउंड्स द पियानो एंड ही स्टार्ट्स प्लेइंग इट, इट रियली लुक्स लाइक हाउ ही हैज़ कनेक्टेड विद हिज लॉस्ट सोल. और वो जो सीन था, it really makes you emotional, and it really makes you think like how fortunate we are. So if anyone is into history, they should watch The Pianist as well. Pianist is a really good movie, and yes, it's a history related. Gladiator is a really good movie as well. Gladiator is my one of the most favorite movies of all time. Or Gladiator is on a true story as well. Apart from that, Three-Handed Rise of an Empire is my favorite movies as well, which is based on a true story as well of a commander from Sparta. Thinks over his I forgot his name. Uh, but yes, you should watch these movies if you want to. But yes, I think so. This should be it. I will be ending my podcast now, and till then, guys, take care. अपना ख्याल